Dear learner, in this video we are going to see the liquidity ratios, which include two ratios, current ratio and quick ratio. Meaning of current ratio. Current ratio shows the relationship between current assets and current liabilities of the company. It is calculated by dividing the current assets by current liability on a particular date. So formula for the current ratio is current assets upon current liability. So for this we are supposed to find out current assets of the company and current liability. वो बैलेंस शीट में दो हेड थे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, उसमें से ही आपको मिल जाएगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. What is the meaning of quick ratio? Quick ratio is a relationship between the liquid assets and current liability. Now what do you mean by liquid assets? Liquid assets का मतलब होता है quick assets, उसको भी बोलते, उसको quick assets भी बोलते हैं, एंड उसका मतलब होता है जो करंट एसेट्स है उसमें से माइनस स्टॉक कर देना है, राइट. सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. लेट अस सी वन एग्जांपल. From the following information, calculate the current ratio and liquid ratio and working capital. Cash and cash equivalent is given, trade receivable is given, inventories, trade payable, short term borrowing, other current liability and other current assets. These are the things that you are having for the purpose of calculation of current assets, current ratio, liquid ratio and working capital. नाउ सी करंट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू फाइंड आउट द करंट एसेट्स फ्रॉम द क्वेश्चन. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट्स. दिस आर करंट एसेट्स एंड 16,154, 120 एंड 50, तो इट कम्स टू 3,40,000. करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस अदर करंट लायबिलिटी. 1,50,000 प्लस 10,000 10,000, तो 1,70,000. सो करंट रेशियो क्या आएगा? टोटल करंट एसेट्स दैट इज 3,40,000 डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटी दैट इज 1,70,000. सो इट कम्स टू 2:1. दिस इज एन आइडियल रेशियो. 2:1 इज एन आइडियल रेशियो. कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के पास डबल करंट एसेट्स है कंपेयरिंग टू लायबिलिटी. लायबिलिटी जितनी है उससे डबल हमारे पास करंट एसेट्स है. लिक्विड रेशियो कैसे मिलेगा? ऑल द करंट एसेट्स माइनस क्या करना होगा आपको? इन्वेंट्रीज करना पड़ेगा, और प्रीपेड एक्सपेंस अगर दिया है तो वो भी माइनस होगा, राइट. तो यहाँ पे 3,40,000 माइनस 1,20,000 इन्वेंट्रीज एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज 50,000, राइट. अदर करंट एसेट्स में वही होता है प्रीपेड और एडवांस, राइट. तो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, वो तो ऐसे रहेगी 1,70,000. सो इट इज 1:1. दोनों इक्वल है. करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर इक्वल. वही वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स वी हैव फाउंड आउट 3,40,000 माइनस 1,70,000, इट्स कम टू 1,70,000. सो बाय दिस वे वी आर सपोज टू कैलकुलेट द liquidity ratios through current assets and current liability. Thank you.